Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Easy Maths with Amna. In this video, we are going to understand exercise 5.1, question number 1, solve and represent the solution on a real line part 4. These type of questions are very easy and very simple and solved in 3 steps. Number 1 step, you have to use the equation and find the value of the x variable provided in the equation. After finding the value, you have to substitute the value into the original equation and find out either it satisfied the equation or not. And the third step is that you have to plot that x value on a number line. Starting with the first step, take that equation and find the value of x variable. 2 remains same on the left hand side. When we open the bracket, according to the distributive law, outer value is going to multiply with each and every term. 7 multiply 2 become 14x, plus sign 7 multiply 4 become 28, plus 12x. 2 remains same, equal to, now arrange according to the like terms, 14x plus 12x plus 28. 2 remains same in the next step. 14 plus 12 we get 26x. Same terms को आपस में ऐड करेंगे, plus 28. Simply we have to calculate the value of x variable. Plus 28 is the constant. When constant changes side and goes on the other side, it becomes negative. Plus 28 change into minus 28 is equal to 26x. 2 minus 28 we get minus 26 equal to 26x. 26 is a coefficient which is multiplying with the x variable. When 26 change its side, multiplication change into division. Minus 26, this 26 goes on the other side, become division 26 is equal to x. 26 cut with 26 we get minus 1. So our required answer is equal to x is equal to minus 1. We done the first step. In the first step, by using that equation, we calculate the value of x variable. Now we have to check either it's true for the solution or not. How we are going to check it, either it's true for the solution or not? Just substitute the value x is equal to minus 1 into that original equation. Original equation is 2 is equal to 7, 2x plus 4 plus 12x. Substitute the value x is equal to minus 1, 2, 7. Always substitute the value inside the bracket. Minus 1 inside the bracket, plus 4 plus 12. Again x, rather than x we are going to substitute minus 1 inside the bracket. 2 is equal to 7. 2 multiply minus 1 become minus 2 plus 4 plus 12 multiply minus 1 become minus 12. Next step, 2 is equal to 7. Minus 2 plus 4 we get 2 minus 12. 2 is equal to 2 sevens are 14 minus 12. Then again 2 is equal to 14 minus 2 equal 2. Hence we prove that the left hand side is equal to the right hand side by substituting the value of x is equal to minus 1. It means that the x is equal to minus 1 is true for that set. So now we are going to plot that x is equal to minus 1 on a number line. फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि हमने x को प्लॉट, x की वैल्यू को कैलकुलेट किया. इन द नेक्स्ट स्टेप वी सब्स्टिट्यूट द x वैल्यू इनटू द ओरिजिनल इक्वेशन एंड फाइंड आउट दैट द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. नाउ वी इन द थर्ड स्टेप वी आर गोइंग टू प्लॉट द x इज इक्वल टू minus 1 ऑन अ नंबर लाइन. बाय यूजिंग द स्केल ड्रा स्ट्रेट लाइन. एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं. 5 मिडिल पॉइंट पे आप इसको पॉइंट्स प्लॉट कर दें. 5, 6 पे एक पॉइंट प्लॉट कर दें, 7 पे एक पॉइंट प्लॉट कर दें, 1 पे एक पॉइंट, 9 एंड 10. नाउ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड 4, 3 पे एक पॉइंट प्लॉट कर देंगे, 2 पे 1 एंड 0. लाइन के दोनों तरफ एरो, बिकॉज लाइन इनफाइनाइट होती है, हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं दोनों तरफ अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट. 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 2, 4, 6, 8. 2 का डिफरेंस ले लेना, 2 2 के 0, 2, 4, 6, 8. लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव वैल्यूज आती हैं, -2, -4, -6, -8. वी नीड टू प्लॉट x इज इक्वल टू -1 ऑन दैट रियल लाइन नंबर लाइन. x इज इक्वल टू -1 कहाँ होगा? 0 और -2 के दरमियान होगा. 0 और -2 के दरमियान आप एक पॉइंट, मिडल में एक पॉइंट प्लॉट करें. मेक एन एरो ऑन दैट. दिस इज x इज इक्वल टू -1 and this is our required answer.
If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to Easy Maths with Amna. Allah Hafiz.